हेलो ऑल, दिस इज चरवाक लोकायत और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लाइव में। सो द टुडेस मेजर टॉपिक इज अबाउट डाउरी डेथ्स एंड this is another important topic which is actually neglected, which is not discussed. The I mean, we used to have shows of Amir Khan like Satyamev Jayate, etc., which discussed about these issues like child marriage, dowry, and even female infanticide, etc., or even say child labor or trafficking. But nowadays we don't have these shows. We don't have these topics being discussed. The mainstream media is busy with the Hindutva versus Islam narrative, and they focus on those sort of thing, and it's done on purpose. I mean, the whole issue is diverted to other trivial things rather than the core issues, the main bigger issues. That's never brought in the highlight. So dowry is one such issue, and while one can admit that there has been some reduction in terms of deaths over the year in the dowry, it's still a practice and it still holds the potential for violence, and it still holds the potential for uh, you know uh, crimes committed against women. So this cannot be ignored, and as a request, whoever is watching this live, to like this, share this, comment and subscribe and hit the bell icon so we can discuss more on this. Okay, one second. uh, so I will be discussing these things. Somebody is writing जनेऊधारी ब्राह्मण चरवाक लोकाता जनेऊ पहने हो exposed करता हूँ. I don't care what you think. Okay, what you think doesn't much matter. uh, that might be your opinion, that might be your viewpoint, but my viewpoint is to expose the superstition in India and how best we can move ahead, remove untouchability, remove casteism, and then move ahead. Okay, that should be the main point. So here are some of the stats which I would like to share regarding the dowry. And while this has been a major issue over the years, uh, it still continues to be an issue which is neglected on purpose by media. Let me share you some statistic here. Okay, uh, one second. Here comes the statistic. So by year 2021, okay, the dowry deaths were contributing to 6,700 deaths. Year 2021. Back in 2025, it was around 6,787. 2014, it crossed around 8,700 something. Okay. So, yeah, over the years, yes, there has been some reduction in the dowry deaths. Yet, 6,700 plus is not a small number. I mean, it's still significant and it's still problematic. Okay. We need to focus on eradicating the dowry deaths.
So dowry needs to be eradicated. As long as dowry is there, this Dahej Pratha, as we call it in Hindi, as long as this is there, you will continue to see the deaths. Even though we have 1961 Dowry Prohibition Act, okay, then we have Section 498 and Section 304, which which includes dowry death under domestic violence for punishment. Yet we somehow, I think, we have failed to curb this, and this is mainly in part due to the lack of awareness and emphasis on traditional family, bonding, and family uh, say, spending the money, and in the name of culture, this is what has been propagated. So Dahej Pratha, dowry deaths, everything is here justified through the name of culture, through the name of sanskar, through the name of family tradition, family values, etc., etc. And because people here somehow hold this idea that family is very sacred, uh, they hold that uh, our tradition or something to be celebrated. People never bother to question the authority of those tradition. They never bother to question about, why do you need a system where you have to take loans for paying the dowry and get into a debt trap, and ultimately it leads to killing of your own daughter, and ultimately you also commit suicide as a parent. Why don't people question that? And that's really the big issue. So yeah, there is actually pretty good website statista.com which actually deals with statistic regarding the reported dowry deaths. Yes, while the number of deaths over the year has been somewhat reduced, yet it is very significant. Not a small thing to ignore, and it's still an issue where many cases go unreported. इंडिया में मेजोरिटी जब भी केस होता है दहेज प्रथा से रिलेटेड, वो तो अनरिपोर्टेड होता है. ये तो रिपोर्टेड केसेस की बात करें, लेकिन अगर आप अनरिपोर्टेड केस को भी इंक्लूड करेंगे तो आप यू सी कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में. लेकिन इस पे कोई बड़े न्यूज मीडिया, यूट्यूब चैनल या फिर सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं मिलेंगे बात करते हुए. वो प्रॉब्लम पे और प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे बात नहीं करेंगे. हाँ, वो ये आपको बताएंगे कि भाई हमारे भारत में जो भी फैमिली ट्रेडिशन है, वो कल्चर है, वो संस्कार है, उसको सेक्रेड मानो और उसको फॉलो करो. और वो जो फिलॉसफी है वो बहुत बड़ा फिलॉसफी है, यूरोप से भी ज्यादा बड़ा फिलॉसफी है. आपको ये मतलब आपका मीठा खिलाएंगे ये चीजें, मीठी बातें करके. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द मोटिवेशनल स्पीकर्स डू. ओके, सो डू शेयर दिस लाइव. आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने घर परिवार वालों को दिखाएं, गांव वालों को दिखाएं, बच्चों को स्पेशली दिखाएं, ताकि फ्यूचर में जब वो बड़े हो जाए और उनको बोला जाए कि भाई मैं दहेज ले रहा हूँ अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटी मुंह पे तमाचा मार के बोले दहेज ले रहे हो तो मैं शादी नहीं करूंगी. भाई दहेज लेना बंद करो, मैं शादी तब करूंगी. ये कंडीशन रखिए, ये होना चाहिए. तो मैं एक और दिखाना चाहता हूँ ऐसे ही रेफरेंस. ये देखिएगा, ये एक रिसेंट केस था इंडिया में, और ये रिसेंट केस पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको भी शर्म महसूस होगा कि भाई हमारे देश में 76 ईयर्स हो चुके इंडिपेंडेंस को आए हुए, लेकिन फिर भी हम दहेज प्रथा से ऊपर नहीं उठ पाए, हम दहेज प्रथा से आगे नहीं बढ़ पाए. ये देखिएगा, डेथ ऑफ 3 सिस्टर्स स्पॉटलाइट्स इंडियाज डाउरी वायलेंस. मतलब 3 बहनें और उसका एक भाई है छोटा सा. तो 3 बहनों के बीच झगड़ा हुआ दहेज को लेकर के, डौरी को लेकर के, और तीनों जो है मृत पाए गए विथ उसके भाई. उनका एक छोटा भाई है, उसके साथ मृत पाए गए एक कुएं में. और ये हुआ एक यूपी के गांव में. तो ये न्यूज जरा पढ़ लीजिएगा. ये आपको दिखाता है कि डौरी डेथ, डौरी से रिलेटेड जो वायलेंस है वो अभी भी इम्पैक्ट कर रहा है, अभी भी जो वो है नुकसान कर रहा है समाज का, आज भी नुकसान कर रहा है.
हमारे यहाँ सदगुरु है, आचार्य प्रशांत है, श्री श्री रविशंकर है। हमारे यहाँ आप बोलेंगे तो भाई आपके क्या इतने सारे अ, बाबा लोग कथावाचक घूम रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री घूम रहे हैं, देवकी नंदन ठाकुर घूम रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य घूम रहे हैं, ये सारे सो कॉल्ड धार्मिक लोग घूम रहे हैं। ये आपने कभी देखा है कि ये कभी विरोध किए हो बाल विवाह का? कभी विरोध किया हो दहेज प्रथा कुरीतियों का? कभी विरोध किया हो इन्होंने भ्रूण हत्या और आपका क्या बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड का? कभी इन्होंने विरोध किया हो छुआछूत का, अनटचेबिलिटी का? कभी विरोध किया हो इन लोगों ने क्या बोलते हैं आपका चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग का? कभी विरोध किया है ये कथावाचक और ये सो कॉल्ड गुरु और बाबा लोग ने? गुरु और बाबा लोग उल्टा हमने ये देखा कि सतील को भी वो जस्टिफाई करते हैं। कभी इन लोगों ने विरोध किया डायन के नाम पे गांव में या ट्राइबल इलाकों में बस्तियों में औरतों को मार दिया जाता है, महिलाओं को डायन बोल करके, विच हंटिंग? नहीं, इन सब पे कभी बात नहीं करेंगे। मतलब जग्गी वासुदेव बोलेगा कि भाई लेट्स सेव द वाटर सॉइल एंड फॉरेस्ट, वो हुआ महान क्रांतिकारी। अब यही बात बोले जमीन जल जमीन और जंगल, ठीक है, ट्राइबल बोले, वो हो गया नक्सलाइट टेररिस्ट। ये है हमारे समाज का माइंडसेट। ये माइंडसेट बनाने वाला और बेचने वाला कौन है? ये हमारा इंडिया का माफिया है। रिपब्लिक टीवी, एनडीटीवी, ये माफिया है जो ऐसे आज के टाइम पे माइंडसेट बना के बेच रहा है। डॉरी पे बहुत कम बातें हुई हैं, बहुत कम लोग, लेकिन कोई नहीं कर रहा। Acharya Prashant talked about witch hunting. Yeah, Acharya Prashant did talk about female infanticide. See, compared to many other babas and gurus, one can say that okay, maybe Acharya Prashant is more open-minded in talking about these social issues, but that doesn't take away the fact that in India, anything, any evil, any bad is justified. You know, any bad can be justified through spirituality, through culture, through sanskar, through this, through that. Anything, literally anything. धर्म के नाम पे आप कुछ भी बेच दो, लोग खरीद लेंगे आराम से। धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे कुछ भी बेच दो, वो लोग खरीद लेंगे भाई। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ओके। तो ये लिंक सबको पढ़ना चाहिए, विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट व्हाई डाउरी हैपेंस। डाउरी यस क्यों होता है, मैंने एक डिस्कस किया कि दैट traditions of family is somewhat given more importance irrespective of your economic status. आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपके पास पैसे नहीं है दहेज देने के लिए, लेकिन फिर भी आपको दहेज देना है क्योंकि वो समाज और वो फैमिली उसको सेक्रेड मानता है भाई। ये प्रॉब्लम है। और दहेज देने का एक ही तरीका है कि आप मनी लेंडर के पास जाओगे और आप एक लोन लोगे भाई। अब लोन में हमेशा आप भर तो नहीं पाओगे क्योंकि आपकी कोई कमाई ठीक से नहीं हो रही है, लोन तो भर नहीं पाओगे। जब लोन नहीं भर पाओगे तो यू आइदर बिकम ए बॉन्डेड स्लेव ऑफ द मनी लेंडर और यू लाइक कमिट सुसाइड। यही होता है इन मेजॉरिटी ऑफ दिस केसेस, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास फैमिली और गरीब फैमिली में यही होता है, ठीक है। अपर मिडिल क्लास कैन से कि भाई हम अर्बन एरिया में रहते हैं, देयर इज सम प्रिविलेज, मे बी यू अफोर्ड डाउरी एंड यू कैन इवन जस्टिफाई इट इन द नेम ऑफ कल्चर, धर्मा, वॉट एवर, ओके। Rich person like crorepati's or Ambani's, absolutely no problem. They can give away 300 crore, 200 crores of dowry, not a loss in their savings account. Okay. गरीब के लिए 5 लाख का डौरी खरीद के देना भाई, वो अपने आप में करोड़ रुपया होता है भाई उसके लिए। And society enforces or reinforces these things basically. So here is very another interesting article, okay. It talks about dowry and dowry deaths, okay.
about political law and what are the things that is happening. Okay, of course, the public awareness campaigning in social media through my YouTube channels like mine is very useful इन दिस रिगार्ड कि आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाइव शेयर करें ताकि लोगों को बोले कि डाउरी क्यों नहीं लेना चाहिए। पहली बात, आपके पास इनकम कितना है, आप कितना कमा रहे हो, आपका इनकम तो देख लो एक बार। डाउरी देने लायक हो आप, पहले ये आप देखो। और अगर आप डाउरी देना ही चाहते हो, आप लोन ले रहे हो, तो क्या आपको उतना इनकम मिल रहा है, उतना इनकम कि आप वो लोन भर लो जिस लोन को आपने डाउरी देने के लिए लिया है, दहेज देने के लिए जो आपने पैसा लिया है भरने के लिए, आपके पास उतनी कमाई होती है? ये पहली बात। दूसरी बात, जो लोग दहेज मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कंडीशन डाल के आपकी बेटी के साथ शादी हम तब करेंगे जब हम आपसे दहेज लेंगे, आप दहेज लेंगे, तो मेरा एक यहाँ पे सवाल है कि भाई लड़की का कोई वैल्यू नहीं है? डजंट द गर्ल हैव एनी वैल्यू? उसका खुद का कोई वैल्यू नहीं है क्या कि आपको दहेज देकर ही उसकी शादी करनी है और उसी परिवार में कर रहा है? व्हाट इज द गारंटी कि भाई वो लड़की जो है उस परिवार में जाके खुश रहेगी? शादी से पहले वो कंडीशन डाल रहे हैं भाई खुशी का, तो शादी करने के बाद वो कैसे खुश रह सकती है उस परिवार में? सोच के बताए जो भी लाइव देख रहे हैं। हाउ डू यू इंश्योर एंड गिव मी गारंटी दैट she will be happy in that in-laws house after marriage, in-laws house after marriage? How she will be happy? What is the guarantee? Hmm? Of course, when somebody is putting condition, it means they will what do you say, the amount of wealth they can afford for dowry, even if it means troubling her, torturing her, domestic violence, etc. That is there another. So these are the thought process. And number three, even if you take a loan, you don't have money to repay the loan which you have taken for dowry. So you fall into a debt trap. So you have to take another loan to pay back this loan. And for this loan you to pay back, you take another loan from somewhere else. You fall into debt trap. Either you fall into debt trap or you become bonded labor. Or third option, when you feel frustrated कि भाई life बहुत हो गया, you commit suicide. So on a backdrop, dowry is killing you mentally here. Basically, it is killing you financially. Basically, so why do you want to continue dowry? Stop the dowry. You can increase your per capita income of family if you stop giving dowry. Okay, and focus on your income and wealth accumulation. अगर कोई लड़की के सामने कंडीशन रख रहा है कि भाई डाउरी देना है तभी हम शादी करेंगे, बोल दो नहीं भाई हमको शादी नहीं करना है। लेट द गर्ल रिमेन अनमैरिड फॉर एंटायर हर लाइफ, इवन इफ इट मीन्स नॉट मैरिंग। क्योंकि हर मैरिज में डाउन मत करो भाई। आज के टाइम में क्या लड़कियां मतलब इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती, काम नहीं कर सकती, कमा नहीं सकती, पढ़ाई लिखाई करके आगे नहीं बढ़ सकती है, तो क्यों मतलब शादी करे? बेटर है शादी ही मत करो भाई, दहेज मत दो, बोल दो कि भाई मुझे शादी ही नहीं करना है, दहेज देना ही नहीं है मेरे को। तब समाज की अकल थोड़े ठिकाने आएगी। और जब भी कोई आस पड़ोस में शादी हो रही है और ये चर्चा है कि डाउरी डाउरी मतलब लिया जा रहा है, इमीडिएटली पुलिस को कंप्लेंट करें, किसी एनजीओ को कंप्लेंट करें, पुलिस को कंप्लेंट करें और लॉ एनफोर्समेंट को आप आगाह करें कि भाई ये चीजें हो रहा है। मे बी यू कैन सेव दैट गर्ल्स लाइफ, हु नोस। सो हियर आर सम ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन कि हम क्या कर सकते हैं एज अ समाज। और एजुकेशन को बेहतर करो, सोशल एजुकेशन में लड़कियों को बताओ कि भाई अगर आप बड़ी हो जाओगी और आपको शादी के लिए बोला जा रहा है दहेज लेंगे तभी शादी करेंगे, तो भाई बोल दो शादी नहीं करनी है ऐसी शादी जिसमें आप कंडीशन डाल रहे हो मेरे पापा के लिए। और
दहेज के लिए अपना इकोनॉमिक कंडीशन भी खुद का देखो और अपने पापा का परिवार का भी इकोनॉमिक कंडीशन देखो कि वो पैसा लोन ले लेंगे दहेज के लिए तो क्या वो लोन को भर पाएंगे? पैसा है उनके पास? पहले ये भी तो देख लो। तो मैं बोल रहा हूं डायरेक्टली कि ना करें इन दैट केस। और द बेस्ट थिंग इज सोशल अवेयरनेस। स्कूल में ये कैंपेनिंग चलो सोशल अवेयरनेस का कि भाई हम लड़कियों को और लड़कों को बता दें ये चीजों को और सेंसिटाइज करें इस इशू को लेकर के, that how dowry actually destroys the family thing for the very thing which they hold dowry as sacred। वो कैसे इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमको ये देखना है। ठीक है, so that's the only way we can solve this problem। So that is the only way we can solve this problem. We need a social awareness education at schools, at gully gully mohalla mohalla level, that can be very useful in this. Okay, that is another point. Now let me share another link which actually talks about this. So here is the data between 2017 and 2021. Total deaths 35,000 total। ओके, सारे चारों साल का मिला करके फ्रॉम 2017 टू 2021 सबका मिला करके, ठीक है, 35,493 dowry deaths were reported, which means 20 deaths daily as per government data, as per National Crime Record Bureau's data, NCRB data। यह है मतलब 20 dowry deaths per day। एंड यूपी टॉप्ड। यूपी में एवरेज आपका 6 deaths per day। यूपी टॉप्ड in this। So that talks volumes about the issues in our country। As I said, 2021 saw some amount of decline, but it's still a big issue here which we need to discuss. As per the very government's own data, one cannot ignore this fact that 20 deaths per daily, that's like a kind of, it's nothing short of a genocide in some ways. I mean it's technically some may call it genocide, some may not, but irrespective, 20 numbers, I mean, come on, don't they have life? Don't they have value for their life? Don't they have their own individual thinking and aspiration? But thanks to dowry, all that goes down the drain. So any family, any bride family, or any groom's family which says they need dowry for marriage, keep in mind, 9 out of 10 times, more often than not, the girl will be more unhappy. Here is what I think. Girl will be more unhappy in their in-laws family than in her own father's family. They will be more unhappy. That's what we need to keep in mind. So better stop this nonsense marriage. I would rather, it's not even marriage, basically, it's like a buy and sale, it's a contract. And you have people like Katha Vatsak who say, because you took dowry, right, for the girl, you need to take care of the girl more. Wow, that's so philosophical. I mean, that should have showed up in the NCRB data, the number of deaths. That doesn't work। देवकी नंदन ठाकुर का एक वीडियो पड़ा हुआ है जहां वो बोलते हैं कि भाई लड़की के लिए तुमने दहेज लिया है ना, तो लड़की को ज्यादा वैल्यू दो, उसको संभालो, उसको मारो मत। अरे भाई मारेंगे भाई, दहेज के लिए ही उसको मारेंगे, और दहेज के लिए ही मारेंगे। आप क्या महाराज बता रहे हो यहाँ पे?
देवकी नंदन ठाकुर ऐसे बकवास बातें करके ही वो दहेज को जस्टिफाई कर रहे हैं हमारे यहाँ। वो घूंघट को जस्टिफाई कर रहे हैं, कमरे में बंद रखना चाहिए, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए। ये हॉलीवुड बॉलीवुड का मूवी देख करके लड़कियां ओपन हो गई इसलिए प्रॉब्लम है समाज में। क्या बातें कर रहे हैं ये। और फिर आप बोलते हो कि हम बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं। क्या एम्पावरमेंट कर रहे हो आप उनको धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे और उनको नीचे ढकेल रहे हो भाई। तो यहाँ पे तो ये डेटा जरूर चेक कीजिएगा, छोटा नंबर नहीं है भाई मैं। So 20 deaths, come on, that's not a joke. Okay, 20 deaths. Yeah, that's some level of killing every day that goes on for dowry. We need to look at the latest NCRB data. I hope we come to know if there is any reduction or if it has any increased. But I'm sure this is a menace, a social menace. And but YouTube channel like Beer Bicep, Abhijit Chavda, Praveen Mohan, what you call like Charvak podcast. Okay, these should have been the ones who to talk about these issues. Okay, at least even if they want to remotely consider bringing social issues into their discourse. Imagine अगर ये चैनल थोड़ा बात करते, maybe we could have reduced further dowry deaths by 50% or something. Who know? You never know, because India today is vastly connected through social media. शायद हम इतना ही कम कर लेते, who knows? Or even 25% further reduction, who knows? But the big channels never bother to talk about it. Whether it's Dhruv Rathi, Akash Banerjee, Sandeep Maheshwari, and Vivek Bindra, they never talk about this issue or raise their concern. But raise the concern on this. There is a real problem here, that people who think that they're economically privileged enough to continue with dowry try to enforce it on people who are economically underprivileged, who cannot afford to have dowry. And they justified that some family is sacred, culture is sacred, this is our sanskar, this is our cultural values, blah 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 and whatnot. That's what's going on in India. बड़े यूट्यूब चैनल तो बात नहीं कर रहे, तो यू हैव यूट्यूब चैनल्स लाइक मी लेफ्ट to talk on this issue so far. Even the so-called other rational channel, there are rational channel, but uh, we have Buddhist journey, uh, okay, Kalpanik Azad, and we have Bimari channel, okay. So these YouTubers, they'll talk about Buddhism so much, so much, so much, but they don't raise these basic concerns in the society. They can easily do a 5 to 6 hour live stream entirely debating with the Hindutva guys on issues like witch hunting, issues like child marriage, issues like dowry, issues like female infanticide and feticide, issues like trafficking and child marriage. I mean, while agreed, casteism is at the core, at the center of the issue, and definitely that needs to be brought out in the highlight, and that needs to be curbed. But around the periphery of that center is these issues. Mind you, don't think that by talking about these things you are not attacking caste system. You are attacking caste system because these practices are meant to control women and make her conform to the caste hierarchy and caste dominances. Basically, child marriage is done for that. Same can be said about female infanticide as well, blood purity. Same can be said about, you know, uh, uh, witch hunting in many ways.
So all these are done directly or indirectly to make women conform to the caste norms of the local communities, basically. So that's how it is done. And we need to eradicate these things. Hence, these issues also need to be talked about, which they say they are rationalist YouTube channel, but they support Buddhism, but they never talk about this. एक है विपक्षवाद, एक है बुद्धिस्ट जर्नी, एक है काल्पनिक आजाद, एक है चुमित बीमारी। ठीक है, ये लोग कभी मतलब अच्छा वो क्या बोलते हैं, ह्यूमन विथ बुद्धिस्ट, ह्यूमन विथ बुद्धिज्म, ये लोग कभी मतलब इस पे बात नहीं करते, इन इश्यूज पे टॉपिक को रख करके। इमेजिन करिए अगर वो भी इन इश्यूज को लेकर के अलोंग विथ बड़े बड़े और है ना, बीर बाइसेप्स, बीजी चावड़ा, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी, ये सब एक साथ पैरेलली मिलकर के कोलैब करके लाइव करे भैया, कोलैब करके भारत में एक दिन 2 दिन में ये इशू एक वाइल्ड फायर की तरफ फैल जाएगा। अवेयरनेस बढ़ जाएगा। 50 to 70% dowry deaths can be reduced. Cases of dowries can be brought down significantly. लेकिन काम करते नहीं है। So you're left with only YouTube channel of only 800 plus subscriber like me to talk about an issue which pertains to 1.43 billion people in India. When I say 1.43 billion, dowry is mostly highly practiced in Hindu and the Muslim community. It's not so Hindu, Muslim and the Jain community. Basically these three community. डॉरी का सबसे ज्यादा अगर प्रैक्टिस कहीं पे होता है तो आपका है हिंदू, मुस्लिम और आपका जैन कम्युनिटी में। जैन कम्युनिटी कैन अफोर्ड टू डू बिकॉज उनके पास पैसा है, बिजनेस करते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज। हिंदू कम्युनिटी एंड मुस्लिम कम्युनिटी में दे डू इट डिस्पाइट कि पैसा नहीं है, लोन मार के मुझे मरना है, मैं लोन लाके खुद को भी मारूंगा और अपनी बेटी को भी मरवाऊंगा। ये है चक्कर आपका हिंदू और मुस्लिम फैमिली में। So, to be honest, when you consider the fact, it's more a problem within these three community. Christian community में तो डॉरी का उतना नहीं है भाई, वहां पे there is hardly any. सिख कम्युनिटी में भी उतना मतलब चर्चा में नहीं आया है। तो सिख कम्युनिटी में भी मतलब उतना ये चीज नहीं है। बुद्धिस्ट कम्युनिटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर नियो बुद्धिस्ट और नवयान, obviously it is dependent on the rationalist interpretation of Ambedkar's Buddhism. Okay, his version of Buddhism, a very rationalist and modern interpretation. Obviously that doesn't include dowry much. If it is, it's very less, but mostly it's not there. Okay, so the main problem of dowry lies with the Hindu, Muslim and the Jain community. इन तीनों कम्युनिटी के अंदर ही सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम पाया जाता है, एंड दैट्स वेयर वी नीड टू इरेडिकेट दिस। सो दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप मेरे चैनल का लाइव तो कम से कम शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि हम ऐसे मुद्दे पे बात कर सके। मतलब ये मुद्दा पोटेंशियल रखता है, हम इस मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं। इमेजिन हो सकता है कि ये सॉल्व हो जाए, प्रोवाइडेड द मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया डस प्राइम टाइम डिबेट ऑन दिस, big YouTube channels do lives on this, bigger rational YouTube channel which propagates Buddhism does live on this। एक साथ मिलकर के ये काम करें, सोचिए कितने लोगों का माइंड जाग जा सकता है, कितनी जल्दी ये चीज को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन कोई फोकस ही नहीं है इस पे, और जब हम फोकस कर रहे हैं तो ऐसे लोग आ जाते हैं यहाँ पे बोलने के लिए। ये बात है, जनेऊधारी ब्राह्मण जनेऊ पहने हो एक्सपोज करता हूँ, जनेऊ लीला ब्राह्मण, जनेऊ लीला भू देवता, हमको ये चीजें बताया जाता है। खुद का यूट्यूब चैनल है ना भाई, जाके करो इस बात पे लाइव, लाइव तो करते नहीं हो और आके यहाँ पे हमको बता रहे हो।
नेक्स्ट, हाँ, तो दैट वाज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन एंड माय टॉक। अगर किसी को आके यहाँ पे डिबेट करना है, बताना है, और किसी को लगता है कि भाई मैं गलत बातें बता रहा हूँ, मैं एंटी हिंदू हूँ, आई एम टॉकिंग समथिंग एंटी हिंदू, देन प्लीज कम। या Hindus are eighth class citizen because of witch hunting, because of dowry, because of child marriage, because of female infanticide and feticide, because of child labor and trafficking, and because of untouchability. Yes, Hindus are eighth class citizen in India because of these reasons. Yeah, hypergamy is one of the reasons for this dowry. Yeah, that's true. Hypergamy भी एक reason है, and I hope these issues are brought to the fore. Okay, we need to have a stronger discussion or broader discussion on these issues at all level, at social media level, at the mainstream TV media level, in the prime time debates, at university level। यूनिवर्सिटी में इस पे डिस्कशन होने चाहिए। बट यूनिवर्सिटी में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई, कि वाल्मीकि जो रामायण लिखा है, वो वाल्मीकि जो वो दलित थे कि ब्राह्मण थे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, the Ramayana itself is consisting many aspect which is already mythological। मिथोलॉजी ही है भाई। अगर आप बोलोगे रामायण और महाभारत इतिहास से, तो भाई आप ईरान का जो एक एपिक है जिसका नाम बोलते हैं शाहमाने, आप उसको क्या बोलोगे? उसको भी आप क्या हिस्ट्री मानोगे आप? या स्टोरी ऑफ ओजाइरिस एंड आइसिस इजिप्ट का, आप उसको हिस्ट्री मानोगे कि मिथोलॉजी मानोगे? जैसे उन चीजों को हम मिथोलॉजी मानते हैं, ये भी मिथोलॉजी है। हाँ, आपको मानना है, आपको लगता है कि वो कोई सेक्रेड बंदा था, वो आपकी मर्जी है भाई, लेकिन है मिथोलॉजी, उसका कोई रियलिटी नहीं है, और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम पे था। आर्कियोलॉजी में हमको कोई त्रेता युग के काल का कोई सो कॉल्ड एडवांस टेक्नोलॉजी या पुष्पक विमान आज तक हमें मिला नहीं है। ठीक है, सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन द प्रेजेंट डे इश्यूज एंड रिजॉल्व में नहीं, क्या नहीं थे। ठीक है, आज के टाइम तो मुसलमान भी हिस्ट्री को छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है यार। पागल हो गया तुम? मुसलमान आजकल इस्लाम छोड़ रहा है भाई, खुद उसको खुद वो मतलब नहीं है। तो तुम क्या मतलब पकड़े हुए हो कि हमको पास्ट में वो सोने की चिड़िया बनाना, सोने का चिड़िया है, हम ये थे, हम वो थे। अरे सोने की चिड़िया में तो दहेज प्रथा भी था, सोने की चिड़िया में सती प्रथा भी था, सोने की चिड़िया में आपका छुआछूत भी तो था, सोने की चिड़िया में आपका बाल विवाह भी तो था, सोने की चिड़िया में आपका क्या बोलते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड भी था भाई। तो इस चीज पे हम कब बात करेंगे? तो या दिस इज व्हाट वी नीड टू ब्रिंग इनटू द फोर। सो आई हैव शेयर्ड द StreamYard join link। If anybody wants to join, talk, discuss with me, or think that I'm just doing a propaganda here and issue is resolved, and that is, and by the way, Hindu scriptures do describe dowry. You read the Bhagavad Puran's chapter of Rukmini Krishna marriage of Rukmini and Krishna, Rukmini and Satyabhama, Rukmini and sorry, no, marriage of Krishna and Rukmini, marriage of Krishna and Satyabhama, marriage of Krishna and Lakshmana. You read their description, clearly dowry is promoted। बाप जो है वो बेटी को भेज रहा है डौरी में। डौरी में क्या बेच रहा है? इवन मैरिज ऑफ देवकी एंड वसुदेव, डौरी में लड़की के साथ बेच रहा है मेड, सर्वेंट मेड in thousands, horses, elephants, and gold and other jewelries बेच रहा है। So Hindu scriptures are also promoting this thing basically. And Muslims in India, because they are more often they're not converted from Hindu communities, okay, they still continue this practice। Yeah, they don't believe in Hindu gods, they believe in monotheistic Allah, but शादी करते समय भाई हम जो है वो दहेज लेंगे भाई बेटी से। आप अल्लाह पाक का नाम लेना, लेकिन हम आपकी बेटी से दहेज लेंगे भाई शादी करते समय। So this is also common in Muslim communities।
पाकिस्तान में दहेज प्रथा होता है exclusively. So this is what we need to talk about here. So anybody wants to join, they can join. Yeah. Anybody wants to join? Let me know. Because in Pakistan, the only people who don't take dahej is, the Pashtun community in the Northwest Frontier Province. बाकी सब दहेज लेते हैं भाई. शादी में वो पूछेंगे भाई आप दहेज में क्या दे रहे हो बेटी का शादी में, वो करते हैं. तो ये कन्यादान है. आप खामो खामोखा हर चीज से कमियां निकालते हो. अरे यार, हाँ, कन्यादान क्या गजब का कन्यादान भाई, कि वो ससुराल में खुश नहीं रहती, उसका मृत्यु हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है. कन्यादान कर रहे हो इसलिए क्योंकि उनके ससुराल वाले उसका मर्डर कर दे दहेज के लिए. ये है हमारे देश का हाल. ऐसा कुछ नहीं है. So I hope this live stream is shared a lot. Okay. पार्लियामेंट में हमको डिस्कस करना चाहिए. पार्लियामेंट में हमको सोचना चाहिए कि वेदर इज देयर एनी लूप होल इन द लॉ, or if not loophole in the law, what can be done that such instances are reported to the police. So a fundamental change in education system is very much required in terms of social education. हमारे यहाँ social science का education बहुत खराब है, उसमें हमको change लाना होगा to include these issues to be covered. ठीक है, ये है. Sidra Sikha लिख रहे such horrible number. Yeah, such horrible number, but our big YouTubers never bother to highlight these numbers. What to do? कन्यादान में जो भी मिलता है सब कुछ कन्या का होता है. अच्छा, कन्या का नहीं होता है भाई, वो ससुराल का हो जाता है. ससुराल का हो जाता है भाई. और जो बोला जाता है कन्या के लिए है भाई, ये मतलब आप क्या बोल रहे हो भाई? आप इनडायरेक्टली अगर आप बोल रहे हो कन्या के लिए है, तो कन्या क्या वो आज लड़ सकती है ससुराल से असर्ट करने के लिए? is she fighting to assert that it's all mine and you cannot take this, that in-laws cannot take this, it's mine? कितना लोग बोल पा रहे हैं नो दिस थिंग्स आर गिवन फॉर ससुराल मैन? ये सच्चाई है. दिस इज जस्ट मेड अप थिंग बाय द कथावाचक्स who wants to justify this. क्या हमें कन्या के लिए दे रहे हैं भाई, बहुत अच्छा है, तुम करते रहो, ठीक है, while at the same time exploiting the poorer families. Okay, fine, understood. Idealism, yeah. Practical life में नहीं होता है, yeah, it's just an idealism, yeah. So anybody else wants to come and join, talk on this issue? Yes, I'm ready to debate, I'm ready to talk. Okay. As per according to law. Okay. So let me see if anything else is there. Lots of comment, lots of views are coming. I hope this video is shown to your family member, to your people in village, and to people in your areas for awareness. ठीक है. Ground awareness is lot of that required. Okay. You have Hindutva organizations doing lot of so-called groundwork, but they never bother to condemn these acts. Dowry, उस पे नहीं बोलेंगे भाई, हम प्रमोट करेंगे.
विच हंटिंग पे नहीं बोलेंगे भाई, हम उसको प्रमोट करेंगे। आपका बाल विवाह पे नहीं बोलेंगे भाई, बाल विवाह को हम प्रमोट करेंगे। फीमेल इन्फेंटिसाइड फीटिसाइड पे हम नहीं बोलेंगे भाई, उसको हम प्रमोट करेंगे। चाइल्ड लेबर को भी हम कंडेम नहीं करेंगे, चाइल्ड लेबर भी अच्छा है, संघ परिवार मानता है, हम उसको भी प्रमोट करेंगे। ठीक है। सो दे हैव सो मच so called ground network, yet they never will cover these things. इंडिया को पीछे ढकेलना है तो भाई ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, बकवास सोशल प्रैक्टिसेस, सुपरस्टिशन जब तक रहेगा, इंडिया घंटा चाइना से आगे निकलेगा भाई, घंटा आगे निकलेगा। आगे कब निकलेगा? कभी नहीं। तो स्ट्रीम यार्ड लिंक मैंने यहाँ पे पिन किया हुआ है, हाईलाइट भी है। तो स्ट्रीम यार्ड लिंक को क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए। आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, मेरे में बातों में कोई प्रॉब्लम है, कोई लॉजिक नहीं है, तो एक बार सोच समझ के आओ, बात कर लो भाई यहाँ पे। ठीक है। या फिर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ एंड दिस इज एन इशू वर्थ डिस्कसिंग, एक इम्पॉर्टेंट इशू है, वर्थ द टॉपिक ऑफ द टॉक, then please do share this live and also come and share your experience. And if somebody, and this is actually especially true कि women and the girl children needs to see this live, जो स्कूल और कॉलेज की लड़कियां हैं उनको मेरे चैनल का ये लाइव एटलीस्ट देखना चाहिए, कम से कम सोचना चाहिए उनको। ठीक है। दैट डाउरी ब्रिंग्स मोर हार्म देन द गुड। हो सकते एक दो गुड होंगे, आपको लगता होगा, लेकिन हार्म बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल हार्म इज मोर rather than the good which comes. So, it's rather better not to marry or become economically independent rather than going after the marriage, giving the dowry, and treated like a, almost inhumane slave in the in-laws family. And father or parents are treated as bonded labor because they couldn't pay back the loan. Think about it. जो लड़कियां हैं, जो स्पेशली देखना चाहिए भाई मेरे इस चैनल का, तो ये लाइव मेरे इस चैनल को देखे और इसको आगे बढ़ाए, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सके इस चीज को लेकर के। ठीक है। सो मेक श्योर टू ब्रिंग दिस अवेयरनेस। कभी कभी आप किसी शहरी बाहों द्वारा सटाई गई देहाती सास की तरह बैठ के विलाप करते हो। योर ओपिनियन? Law favor women, even innocent families get in danger. Okay, yeah, to an extent, yes, this can be a problem, but this is comparatively small when you consider that it's easier to track the uh, uh, false flags, basically false flags. Okay, आज के time में you have a system of online tracking, and police do extensively use to track this online, because in many of these cases what happens when somebody is doing fake domestic violence cases, their alibi never matches with their actual evidence taken by the police. So then it turns out that it is fake. Okay. Or it is planned or pre-planned. So thanks to digital evidences, the alibi never matches and it's very easy to track. So it's not a very as big an issue as the actual dowry deaths. What I'm really concerned here is the actual dowry deaths and actual dowry taking place, and how much harm it has and why it is harmful, rather than it doing any good to the girl or its family. Okay. So that's what we need to focus here. वायलेंस केस आ रहे दिन समाज में दिक्कत है, सरकार और कानून तो महिला के साथ है। या आई मीन कहने के लिए है, जस्ट फॉर द नेम सेक। ओके। ये सो somebody has commented
Okay, so what else is there? I need to wrap up my live if nobody is joining. So if nobody is joining, I might wrap up the law and sorry, I might wrap up the live. And next week I'm coming live for some other topic, and it will be related to the violence related to superstition. सुपरस्टिशन तांत्रिक बाबा के नाम पे कितने किलिंग्स होते हैं, उसी पे हम एक लाइव कर रहे हैं उस टॉपिक को लेकर के। तो नेक्स्ट वीक हम देखते हैं उस टॉपिक को। ओके, आज का टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हुआ एंड आई होप पीपल हैव शेयर दिस लाइव। ये वही बात हो गया, लोग गलत SC/ST एक्ट लगा देते हैं। एक FIR कराने जाओ तो पता चलेगा एक FIR लिखने में कितना दिक्कत आता है, और जब विक्टिम SC/ST महिला है तब और दिक्कत है। या ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट you have highlighted, Messi. This is an important point to be noted here, basically. Yeah, you cry about this and that, people don't talk about people can't talk about everything. You yourself haven't touched every topic. Okay man, I didn't touch every topic, but I will touch every topic one day. खुश? ठीक है। Okay. What I meant was that somebody who has a very big YouTube audience, how much good they can do by talking about this issue. That was the main point which I was trying to make. Okay. मेरे चैनल का सब्सक्राइबर देख लो, लेकिन मैं ये मुद्दे उठा रहा हूँ। बाकी चैनल का सब्सक्राइबर देखो, वो क्या मुद्दे उठा रहे हैं। So imagine such a big YouTube audience you have, and if you talked about this topic only one live stream, two live stream, maybe you can save enough people's life. Who knows, शायद वो लड़की एक दिन YouTube खोल के देख ले, अरे इतना बड़ा यूट्यूबर ये लाइव कर रहा है, अरे दहेज के ऊपर, मुझे तो दहेज के लिए मारा जा रहा है घर पे, देखते हैं क्या सजेशन है। मे बी, जस्ट मे बी, इन केस, हु नोस। ओके, तो ये है, हाँ, ये बात सही है मेस्सी का। So if anybody wants to join the live, they can join. In case if they're not able to join or nobody is joining, I'm ending the live stream. Next week I will be live with that another topic. And remember, Fridays and Sunday, 7 p.m. is the timing for my live. Fridays and Sunday, 7 p.m. Okay, and the timing is 7 p.m. and topics will be different each time. Okay, next topic will be on the killings due to superstition. That's what we will discuss all about. Okay, yeah, you cry about this and that. Yeah, okay, chalo, with this I end my live. Happy Sunday. Bye, good night. हाँ, डॉरी का बहुत प्रॉब्लम है, आज से 10 साल पहले भी, लेकिन जब लड़कियां पढ़ के नौकरी कर रही है और डोरी का प्रॉब्लम भी कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, और कम कम हो रहा है, लेकिन मे बी वी कैन एक्सेलरेट दिस प्रोसेस ऑफ एंडिंग द डोरी। दैट्स व्हाट आई मेंट। ओके, विद दिस एंड माय लाइव स्ट्रीम। बाय, गुड नाइट।